Good morning, sir. Good morning. Okay, so have you heard the news that the school might get reopened? Yes, sir. Okay, so Sir, but it was about 10th and 12th class only or for whole? initially it will be about 10th and 12th, and that too it's optional. अब मुझे बताओ 10th and 12th में syllabus is already over. So the main problem is with the government. In government schools they have hardly taught anything. तो एग्जाम डिले कर दी है एंड अब कुछ पढ़ाना तो पड़ेगा, इसलिए स्कूल स्टार्ट की है। पता है गुजरात में गवर्नमेंट अपनी स्कूल के बारे में ही कहती है, प्राइवेट स्कूल के बारे में कोई सोचता नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड दे इन्वेस्ट हेविली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सो पॉलिटिक्स इज एक्चुअली वेरी dirty in India. And the most interesting thing will be that the person who is heading education department uh, might not be educated, or even if he might be educated, then level of education would be very low. So this is the problem. In one country they have decided that in you know yes, there is one new president selected in US. What's the name? Hello, do you know who is the new president of US? No, sir. Okay, the surname is Biden or Biden, Yes, whatever sir. is. Joe Biden. हाँ, so he actually said कि my education department will be headed by a teacher, or the person who was actually a teacher. Okay, so that was the thing. And in India, what happened a few years back, Smriti Irani, she was an actress, 12th fail, and she became education minister. सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एजुकेशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक एजुकेशन को हैंड करने वाले पर्सन्स चेंज नहीं होंगे। ओके, सो let's get up for today's session, and today we need to be able to solve two questions. Okay, so here we go. Right now you are able to see question number 20. Okay, so let us solve question number 20. So look here, X bought a machine for 25,000. चलो थोड़ा पहले डिफिकल्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व 21 फर्स्ट. So question number 21, a company purchased a machine for 50,000 on 1st October 16. Another machine costing 10,000 was purchased on December 17, and on 31st March 19, machine purchased in 2016. It means पहला वाला machine is sold at a loss of 5,000. तो we have sold, selling price नहीं दिया है, but if they give profit or loss, so we can find the selling price. So question is important. The company charges depreciation at 15% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year, and we need to prepare the machinery account for 3 years. So first year will start from 1st of April. देखो, don't start with October. Accounts are closing on 31st March, तो स्टार्टिंग होगी 1st अप्रैल से, तो 1st अप्रैल 16 से विल स्टार्ट. सो लेट मी डू वन थिंग, कुछ हाईलाइट कर देता हूँ डेट्स को. ओके,
ये 1 अक्टूबर 16 को परचेस है, दूसरा परचेस है December 17 को, एंड देन वी हैव वन सेल. सो यहाँ पर है ऑन 31st March 19 there is a cell. So these three transactions are there. So let's start. Now, uh, I'm right now sharing the attendance file. Only 19 students are there. I don't know what is the reason why students are not attending the session. Just a minute. Prepare the format for machinery account. Okay, there is one problem. I'm not able to log into my WhatsApp, so I need to use another method so that I can share the attendance file with you. So start making the entries. Initial part you already know how to do. Okay, I have shared the link, and this link will be active only for few minutes. एंड राइट नाउ आई एम एबल टू सी 25 स्टूडेंट्स. मैं रिकन्सलेशन भी करूँगा तो इसमें ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए. ओके, सो विल प्रिपेयर द अकाउंट. हैव यू रिसीव्ड द फाइल ऑन व्हाट्सएप? Yes, Yes. sir. ओके, सो in this question, a company purchased machinery for 50,000. So we are starting. Name of the company is not given, and name of the asset is machinery. So I will write machinery account for
year ending 31st March, look here, it will be 16 or 17. ईयर कब खत्म होगा? 2017. And 1st October 2016, you are purchasing machine for 50,000. So I will write to cash account 50,000, and into bracket I will write M1. This is my machine number 1. अब देखो, already you know the concept, तो along with me try to solve the question. So we have purchased the machinery for 50,000. Now next transaction is in December 17. It means that March 17 तक कोई transaction नहीं है. So what will you do on 31st March 17? What you will charge? Depreciation for 6 months. Depreciation. Very good. So here calculation will be कि on this 50,000, rate is I think 15%, and it will be charged only for 6 months. कोई reason बताएगा why 6 months? Which are these 6 months? October to March. Okay. So April to September में मशीन था ही नहीं. तो now there is one ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखो, पहले तो 15% कैलकुलेट करने के लिए 10% एंड 5% ऐड कर दो. 10% विल बी 5,000 एंड 5% विल बी 2,500. उसका आधा कर दो. 5,000 अगर 10% है तो उसका हाफ कर दो, तो 5% 2,500 होगा. सो 5,000 प्लस 2,500, तो 7,500 विल बी 15%, और 7,500 का आपको हाफ कर देना है. सो हाउ मच इट विल बी? 2,750. परफेक्ट. 3,750. This is just a suggestion. Now it's up to you how you can find the amount. Then by balance carried down, here I will write M1 because right now we are in only machine number 1. I'm circling because it's the balancing figure. 50,000. Here also I have 50,000. And if I minus this, 250. then I will get 46 to 50. And on 1st of April 2017, it will become opening balance to balance brought down into bracket M1. This is written down value of machine number 1. Now let's see which is the next transaction. But before that, uh, let me deactivate the attendance one. Okay, so good. Exit 29 students, those who are present, were visible. Okay, so देखिए, life is very simple. You just need to prioritize the things. Accountancy is a very important subject. इसमें जितनी practice करोगे, that much it would be better for you. Uh, so let's see which is the next transaction here. ये line कहाँ से आ गई? So here it is written that another machine is purchased on 1st December 17. So we need to pass the entry on
1st December 17 to cash account into bracket it is M2 machine number 2, and that was purchased costing 10,000. So this is very easy. Next transaction is on 31st March 19, तो ये तो next year है. So again in this year there is no other transaction. So on 31st March 18, what you will do? You will charge depreciation. So for machine 1 and for machine number 2 separately. Now my question to you is machine 1 का कौन से अमाउंट पर होगा? 46,250 पूरे साल आपने यूज किया है तो उसका 15%. सो ट्राई टू कैलकुलेट 46,250 का 15%. मैं भी रफ वर्क करता हूँ. 693. सो इट इज 6937.5 है तो यू कैन इग्नोर दैट पार्ट. 6938 भी कर सकते हैं. लेट्स 6938 कर दो. देन ऑल्सो देखो if it is in point then you can do rounding up or rounding down. 50 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड मशीन नंबर 2 अभी बॉट किया है दिसंबर में. सो 10,000 का 15%. बट बी केयरफुल, आपको इनटू करना पड़ेगा समथिंग बाय 12. ये समथिंग क्या होगा? परफेक्ट आंसर 4 मंथ्स. विश्वा ने कहा 4 मंथ्स. ये कौन से 4 मंथ्स है? दिस 4 मंथ्स आर दिसंबर. देखो 1 दिसंबर है तो दिसंबर को भी काउंट करना है. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. December to तो March. हाँ, एंड अब देखो सिंपल कैलकुलेशन. 10,000 का 15% विल बी 1,500 और 1,500 का 1/3 करना है. 4/12 इट मीन्स 1/3. 1500 का 1/3 कितना होगा? 500. यस. सो हाउ मच इट विल बी? 7,438. Perfect. So now we will close 31st March 2018 and we'll write by balance carried down machine number 1 as well as machine number 2 separately. Now machine 1 में it will be 46,252 था, उसमें से 6938 आप माइनस करोगे. सो कोई रफ पेपर में कैलकुलेशन करो. 39,312. Yes, you will get this value as 39312. 39312. And for machine number 2, 10,000 was there and you charge 500 depreciation. So it is 9,500. So when you add both this, you will get the value. It will be 48,812. 8, 8 and 4. Yes, 48,812. So this completes our accounting for the second year as well. Please note बस यही आपको समझना है. These types of question generally come in exam. Purchase होगा, sell होगा, but you just need to focus on the concept. Okay. So don't forget to write this total. It will be 56250. Here also 56250.
नाउ देर आर टू वेज टू फाइंड दिस अमाउंट. एक ये होता है डेबिट माइनस क्रेडिट, तो भी मिलेगा. बट वी आर नॉट डूइंग डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट माइनस क्रेडिट से आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 48812. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द अमाउंट एसेट वाइज. सो मशीन वाइज फाइंड करना जरूरी है. नाउ let's move on to the third year. I will extend the lines. So in third year, there is a sell and there is no purchase. And there is one good thing. Okay, this sell is on the last date, if I am not wrong. Yes or no? Yes, sir. So if sell is on first date or on the last date तो easy होगा, because अगर sell first date of the year में हुआ है तो उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जीरो होगा. एंड अगर लास्ट डेट पर हुआ है तो डेप्रिसिएशन फुल होगा. तो बीच में कोई मिक्सचर नहीं है, तो दैट बिकम्स इजियर. सो हियर आई विल राइट ऑन 1st of April 2018 to balance brought down, but if possible write machine wise, so it will become easy. So machine 1 written down value was 39312 and machine number 2's written down value was 9500. So together you got 48812. Now here in the question it is given on 31st March 19 the machine purchased in 2016 यानी पहला मशीन वो sold at a loss of 5000. So I will write now that's a good thing okay, here we are selling on 31st March 19, but then also we should not forget the concept. So on 31st March 19 I will write by depreciation अकाउंट. मैं अपनी सेम मेथड से जाऊंगा. ओके, एसेट सोल्ड की हम जो भी प्रोसेस करते हैं वही हम करेंगे. तो मशीन 1 इज सोल्ड, सो उसका डेप्रिशिएशन देखो कैसे होगा. 39312 इंटू 15% इंटू 12/12, क्योंकि हर बार जरूर नहीं है कि वी सेल एट द लास्ट डेट. सो 39312 का 15% आपको फाइंड करना है. आई एम ऑल्सो डूइंग. तो आई थिंक 7322. नो, आपका अमाउंट तो ज्यादा होगा. 5897 चेक करो. 5897 देखो. 3900 अगर 10% भी लेंगे तो 3900 वैसे ही हो जाएगा. ओके, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 यानी 6000 के आसपास अमाउंट होगा. सो इट इज 5897. यस, मनकिरत is able to get this. And after we have charged depreciation, so on 31st March 19, before we proceed further, क्या prepare करना होगा? We need to prepare one working note. Okay, so here I am preparing the working note to find profit या loss on 31st March 2019. The first and foremost, we need written down value on beginning of the year, which was 1st April 18. So it was 39312. And from this written down value, what do we minus? Depreciation. Okay, till the date of sale. Date of sale is 31st March 19 and it was 5897. So if we do this, then
So I'm getting amount like this, 33415. Check करो, are you also getting the same thing? And अब मुझे बताओ, ये अमाउंट किसके साथ कंपेयर किया जाता है जनरली? From actually this is written down value on date of sale. Date of sale is 31st March 19, and we should compare with the selling price, SP. But selling price is given or not given? It is not given. Okay, so look into the question. It was sold at a loss of 5,000. So यहाँ पर you know this loss is 5,000. तो सोच कर बताओ selling price कितना होना चाहिए? How to find this? So 28,415. Perfect. Okay. Uh, written down value as on date of sale वो है 33. अब लॉस में बेचा है तो उससे 5,000 कम मिले होंगे, तो 33,415 माइनस 5,000, यानी ये दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा, 33 में से 5 गया तो 28, तो 28,415 ये है सेलिंग प्राइस. सो उसकी हम इफेक्ट लिखेंगे ऊपर. सो आई विल राइट बाय cash account, this is my selling price, which is 28,415, and on the same date there is a loss. So if there is a loss, I will write by profit and loss account into bracket loss and reference to working note number 1. So that was 5,000. So can I say we are done with this sale transaction? Yes. So which is our next step? So now on 31st March 19, we need to charge depreciation. But for which asset we will charge this depreciation? Machinery 2. Machinery number 2. Perfect. So for machinery number 2 you will charge. अब ये तो पूरे साल यूज हुआ है. So 9,500 का 15% कैलकुलेट करो. 1425. Please confirm. Are you getting this? 1425. ओके. 950 10% है और उसका आधा 475, दोनों को ऐड कर देना है. सो 15% मिल जाएगा. एंड ऑन 31st March 19, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी मशीन 2 का ही होगा. सो किस तरह से मिलेगा? 9,500 was the value and you have charged depreciation of 1425. हम्म, ये हो जाएगा. 8075. हाँ, 8075. And this is the balancing figure. Let's do total. On debit side it was 48812. सो बैलेंसिंग फिगर जो फाइंड करना होगा 8075. सो ट्राई टू फाइंड इन ए कंसेप्चुअल वे मशीन वाइज. लेट्स सी whether our answer is correct or not. This was the question. Sell price 28415. Yes, ये मिला था. And book value of the machinery on 31st March 19. अच्छा, ये तो हमें नहीं मिला है. कुछ
ओके, ऊपर लिखा है, हाँ, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, यस 8075। परफेक्ट, सो ये है फाइनल आंसर 8075 जो हमें मिला है। ओके, अब ये जो लिखा है ना 33415 बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, यानी ये कौन सी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी की बात कर रहे हैं? द मशीन विच इज सोल्ड। ओके, सो ये देखिए हमने ये ऑलरेडी फाइंड किया है वर्किंग में, मशीन विच इज सोल्ड। लेकिन प्लीज नोट, फाइनल आंसर में जो मशीन सोल्ड है वो नहीं होगा, जो ऑलरेडी मशीन है वो होगा। सो वी आर एबल टू गेट ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज। सो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन is clear to everyone. Okay, now let's move on to the next question. Look here, we have question number 20. जितना पॉसिबल होगा उतना हम सॉल्व करेंगे, अदर पार्ट यू कैन टेक इज ए होमवर्क. So let's discuss this. X bought a machine for 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman. Brokerage means commission. Okay, when you buy anything, whatever is the commission, बस वो asset में add कर देना है. 3,500 for installation and 500 for एन आयरन पेड, यानी इस मशीन को लेने के साथ काफी सारे खर्चे करने पड़े, तो इन सभी खर्चों का आप क्या करोगे? हेलो, व्हाट यू विल डू? वी विल ऐड, यस. मशीन में ऐड करिए। तो देखो 5+1 6,000 और ये 4 10,000 का खर्चा है, तो मशीन कितने में पड़ेगा? 35. 35. Yes. So the machine is depreciated at 10%. देखो 10% में मजा आती है कैलकुलेट करने की. ओके, 15% में थोड़ा सा ट्रिकी होता है. So it is depreciated at 10% on written down value basis, and after 3 years machine was sold to Y for 30500 and 500 was paid as commission. अब यहाँ पर आपको सोचना है कि ये एसेट में आपके हाथ में कितने पैसे आए. बेचा 30,500 में है, बट 500 तो कमीशन वो लेकर गया. सो व्हाट शुड यू कंसिडर एज ए सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितना लेना चाहिए? यस, लावण्यस आंसर इज करेक्ट. सेलिंग प्राइस इज 30,000. देखो परचेस में जो भी कमीशन होता है वो ऐड होता है परचेस प्राइस में. ओके, लुक हियर, ये ब्रोकरेज था 1,000, परचेस में ऐड करो एंड सेल्स में ये लेस करो, बिकॉज व्हेन वी परचेस वी पे मोर, तो ऐड करना है, एंड व्हेन वी सेल वी गेट लेस, इसलिए ये लेस करना है. सो सेलिंग प्राइस 30,000 है. फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन. तो वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर द अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस ही फाइंड करना है. तो चलो ये तो फटाफट कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, एंड सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही फाइंड करना है. सो आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 20. सो आई विल राइट, थोड़ा टाइम कम है, शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ. ओसी मीन्स ओरिजिनल कोस्ट. ओरिजिनल कोस्ट ऑन विच डेट, डेट इज नॉट गिवन. इन्होंने कहा है कि आफ्टर 3 years, तो कोई भी हम डेट अज्यूम कर लेते हैं. लेट से 1/1/2017, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ. एंड I will write this calculation 25,000 plus so and so. You already know ये सभी खर्चे ऐड कर दो, तो we know that 35,000 में ये एसेट हमें मिला है. So you will have to minus depreciation 10% for 2017. Okay, for simplicity मैंने 1st January डेट ली है, कैलेंडर ईयर. So this 10% will be
on this amount. So कितना बन जाएगा? 31,500. So again you will minus depreciation at the rate of 10% for the year 2018. अब ये कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पर. So you will get the value 28350. Please confirm. Yes, sir. And again you will minus depreciation 10% for third year which is 2019. अब ये इस पर कैलकुलेट होगा. So it will be 2835. So ये अमाउंट मिलेगा आपको. So this will be the written down value at the end of third year. So 31st December 2019 में आपके पास ये written down value होगी. And this you will compare with selling price. Selling price हमने शायद कितना 30,000 डिसाइड किया था. Yes, sir. ओके, तो प्रॉफिट हो गया बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर. तो देखो डिफरेंस कितना है. 4,485. यस, 4,485. 4485. तो 4485 का मुझे प्रॉफिट हुआ है. ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. लेट्स सी व्हाट आंसर दे हैव गिवन. हाँ, यहाँ आप देख सकते हो कि 4485 is the gain or profit on this machine. So bus this question is over. There was no preparation of machine account. And one question I am giving you as a homework, and that is question number 22. Okay, so question number 22 is homework, and those students who are able to solve this and get this final answer correct can share the solution in a group so that others can learn or they can copy depending on their mentality. Okay, so I hope you are now getting comfortable with this chapter. Calculations are actually not that much difficult, but you just need to concentrate. Okay, so see you tomorrow. Wish you a good day. Bye bye. Acha, Surendra, I kept that open for only 5 minutes initially. तो अगर आपने late attendance mark किया होगा तो it will not accept. And today 30 were present and 29 attendance I already got. Don't worry. So try to mark on time tomorrow. Okay, you will get marks day after tomorrow. Okay, sorry for the delay. Constantly I am coming to school and hence there is a pressure. Okay, bye bye.